Hello everyone, welcome to this class. आज हमें यही क्लास रे कंप्यूटर रो मॉक टेस्ट 21 डिस्कशन करिवा. क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिवा. Getting data from a cell located in a different sheet called, which option have a right answer? Getting data from a cell that is located in different sheet, it is cell referencing. Option B have a right answer. Cell referencing मन रखंतु. ठीक अच्छे सेल रेफरेंसिंग एवं यह मुख्यतः तीन प्रकार रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहा जाए. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स. सिलेक्टेड सेल्स को लेकिन आपण एक चार्ट क्रिएट करिवे. कोन क्रिएट करिवे? चार्ट. सेथिबाई F11 फंक्शन 11 को आपण यूज करि परिवे. F11 की हेबो यार राइट आंसर. Which function is used to calculate the total number of characters in a cell? Total number of characters in a cell को आपण जते बेले कैलकुलेट करिया पई चाहंती सेति पई लेन फंक्शन को यूज करंती. ऑप्शन ए लेन फंक्शन इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, any change in Excel worksheet data can be shared with Word document by. It means simply जदि बुझिबा Excel sheet रो डाटा को Word document रे शेयर करा जिवो. सेथि पई ऑप्शन ए रे कहै जाउची inserting an Excel file into Word, that is also आपनकर शेयर हबो. linking copied Excel data to Word document, तो एटा मध्ये होई परिबो. Copying and pasting Excel worksheet into Word document, copy and paste रे जरिया also करा जाई परिबो. means all of the above. All the above is your right answer. Option D हेबो यार right answer. Okay. Next, example of non numerical data is कहंतु. डाटा कोन? डाटा होची collection of unprocessed items. और कहा जाए डाटा होची that is रो फैक्ट एंड फिगर को डाटा कहबो. ताले ई डाटाटा होची नॉन न्यूमेरिकल, माने कोन नंबर्स आसीबो नाही. देखंतु एग्जामिनेशन स्कोर रे नंबर आसे एंड बैंक बैलेंस रे आल्सो नंबर आसे आपनर, किंतु एम्प्लॉय एड्रेस रे कोनोसी न्यूमेरिकल्स आसीबो नाही. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए हबो राइट आंसर. बट नॉन न्यूमेरिकल डाटा होई परिबो. नेक्स्ट, ए बूट स्ट्रैप इज ए. बूट स्ट्रैप गोटे कोन कहंतु? बूट स्ट्रैप. बूटस्ट्रैप होची आपनकर ऑप्शन सी गोटे स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम अटे टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर, जहां गोटे कंप्यूटर को रन कराए. ठीक अछि. बूट बूट मन रखंतु कंप्यूटर जेते बेले आपनकर ऑन हुए माने रन हुए सेही प्रोसेस को बूट और बूटिंग कहबे. एवं बूटिंग दुई प्रकार वार्म एंड कोल्ड बूटिंग. ओके. नेक्स्ट, द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन कहंतु. क्यों की स्टार्ट बटन को लॉन्च करिवो? दैट इज विंडोज की कह जाय. कोन कह जाय? विंडोज की. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, इन ए लेजर प्रिंटर द डेस्क ट्रांसफर्स द इमेज टू द पेपर. क्यों प्रिंटर कथा कह जाउची? दैट इज लेजर प्रिंटर रे निम्नोक्त मध्यरु क्योंटा ट्रांसफर करूची इमेज को टू द पेपर रे. ओके. लेजर प्रिंटर रे फ्रॉम कौन करिवो? ट्रांसफर करिवो इमेज टू द पेपर. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द. डाटा दैट इज कॉपीड हबो माने जो डाटाटा कॉपी हेबो until paste, जो पर्यंत सेटा पेस्ट होई नाही, दैट इज क्लिपबोर्ड रे स्टोर हेकी रहइबो. क्लिपबोर्ड मन रखंतु. क्लिपबोर्ड रे until paste स्टोर हेकी रहइबो. Which of the following programs compress large file into a smaller file? निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रोग्राम्स कोन करिवो? कंप्रेस करिवो गोटे लार्ज फाइल को स्मॉलर फाइल रे. दैट इज WinZip. WinZip is your right answer. Option A एबो हेरो राइट आंसर. नेक्स्ट, recently deleted files are stored in. recently deleted files recycle bin रे स्टोर हेकी रहे. recycle bin मन रखंतु. ओके. एंड जदि आपण सेटा को परमानेंट डिलीट करिसंती लाइक
शिफ्ट सहित डिलीट को जदि आपण प्रेस करिवे दैट इज परमानेंट डिलीट देन सेटा रिसाइकल बिन रे स्टोर हेबो नाही यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन कोन फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जरिया रे आपण कोन करि परिबे फाइंड एंड रिप्लेस फीचर जरिया रे आपण रिप्लेस करि परिबे बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन ए both text and formatting को आपण कोन करि परिबे रिप्लेस करि परिबे नेक्स्ट press which key to select different portions of any text by dragging the mouse drag करिबा ई शब्दटा मन रखंतु आपण ड्रैग करिबा पई ऑलवेज कंट्रोल की रो सहायता नियंती कंट्रोल की जरिया रे आपण ड्रैग करि परिबे नेक्स्ट a major step before taking print into the document आपण प्रिंट बाहर करिबा पूर्वरु आपण कोन चेक करंती टू सेव द डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट इंपोर्टेंट बट टू सेट पेपर सेटिंग ओके आपण जो पेपर रे प्रिंट बाहर करिवे तार सेटिंग को देखिवे एंड सी प्रिंट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट जाको प्रिंट प्रीव्यू को है मींस बोथ बी एंड सी हैव हेरो राइट आंसर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर वर्ड काउंट्स फ्यूचर कोन होबो कोंतु What counts future? Which option is your right answer? Option D. All the above is your right answer. Okay. What count future रे आपण जहाँ भी आपणकर नंबर ऑफ वर्ड्स रही तार इनफॉरमेशन पाइबे ऑप्शन बी को यूजफुल व्हेन द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इज लिमिटेड टू सम नंबर ऑफ वर्ड्स एंड डिस्प्ले करिवो द नंबर ऑफ पेजेस देन आपणकर कैरेक्टर्स पैराग्राफ्स एंड लाइन इन द डॉक्यूमेंट सो हमें ऑप्शन डी चूज करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 it is a mark normally round or square dot it is called कोंतु it is a गोटे मार्क अटे जोटा आपनकर राउंड किमा स्क्वायर रो गोटे डॉट अटे तो सेटा कोन को आजबो सेटा को आजे बुलेट ऑप्शन बी बुलेट हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कोंतु फाइंड एंड रिप्लेस रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करबा पई केउ शॉर्टकट की को यूज करा जाय कंट्रोल प्लस इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपनकर परीक्षा रे एमिति प्रश्न आसी पारे मन रखंतु शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हबो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट करबा सबस्क्रिप्ट मींस सेमिति मु लेख देखंतु x2 ओके दैट इज सबस्क्रिप्ट A2 that is also subscript तो एमिति गोटे फॉर्मेट रे आपण रखिबा पई कंट्रोल प्लस इक्वल साइन को शॉर्टकट की जरिया रे सबस्क्रिप्ट करि परिबे नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज गोटे सेल रे थिबा बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होची देखो सेल रे आपनकर नंबर आसी परिबो एंड टेक्स्ट आसी परिबो तो एथिरे जहां भी टेक्स्ट रहिछि दैट इज लेफ्ट रे रहइबो एंड नंबर राइट रे रहइबो So option B is the right answer. From which toolbar we can change chart type? Chart toolbar, okay? Easy question. Chart toolbar को नहीं कि अपना तारो कौन करी परिबे चेंज करी परिबे चार्ट रो टाइप को अपन क्यों चार्ट रखिबे पाई चार्ट बार चार्ट ओके और जे कोन से अपन चार्ट रे रखिया पई चाहंती दैट इज अपन चार्ट टूलबार को नहीं चेंज करी परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करंतु ए यूजर wish to rename a spreadsheet from a workbook which is the correct sequence of events that he would do for this okay प्रश्न कोन कहूची जने यूजर चाहूची रीनेम करेबो कोन से को स्प्रेडशीट को सिंपली बुझो रीनेम करेबो का कोन से को स्प्रेडशीट फ्रॉम ए वर्कबुक which is the correct sequence rename करबा पे कोन करा जाई परिबो प्रथमे आपण राइट क्लिक करिवे on the spreadsheet tab then select rename so option C हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट WYSIWYG stands for okay यार फुल फॉर्म कोन हबो बोलु WYSIWYG it means that is what you see is what you get
ऑप्शन ए हबो राइट आंसर मन रखंतु दैट इज द फुल फॉर्म नेक्स्ट एन आउटपुट डिवाइस इज आउटपुट डिवाइस कोन हे परिबो ऑलवेज कोन करे processed information from a computer into a form the human can understand option ए कहि परिबा बट आउटपुट डिवाइस कोन करे सिंपली जदि हमें कहबा आउटपुट डिवाइस रो काम होची आपन को गोटे जने यूजर को कोन दबो से आउटपुट प्रोवाइड करिवो डाटा प्रोसेस होबा परे जो इंफॉर्मेशन यूजर बुझी पारे दैट इज आउटपुट क्लियरली बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करंतु what happens when you press Ctrl X after selecting some cells in Excel जिते बेले आपण Ctrl X को प्रेस करिवे ताले कोन हबो कहंतु जिते बेले आपण Ctrl X को प्रेस करिवे कोन हबो what happens when you press Ctrl X कोन हे जिवो which option हबो राइट आंसर ऑप्शन A have a right answer. The content of selected cell disappear from the cell and get stored in clipboard. Okay. Option A have a right answer. Clear? Next question number 25. Which of the following describes how to select all the cells in a single column? Which of the following describe how to select all the cells in a single column? सिंगल कॉलम रे आपण सेल को सिलेक्ट करिवे ऑल द सेल को सेथि भाई लेफ्ट क्लिक ऑन द गोटे ग्रे कॉलम टाइटल बटन को दिबे ऑप्शन सी हबो राइट आंसर ओके ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड स्मार्टफोन्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड हैंडल्ड कंप्यूटर इज योर राइट आंसर ऑप्शन ए हबो योर राइट आंसर नेक्स्ट if you need to edit header and footer माने होची गोटे डॉक्यूमेंट रो बा गोटे पेज रो टॉप रे थिबा मार्जिन को हेडर कुआ जाय एवं बॉटम रो थिबा मार्जिन को फुटर कुआ जाय ताले हेडर एंड फुटर को एडिट करिवा पई ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो 2007 वर्जन और ऑनवर्ड्स किबा ताठारु नेक्स्ट वर्जन जा भी रहिछि which menu tab should you access ताले देखो तो आपण इंसर्ट टैब को जाई कि हेडर एंड फुटर ऑप्शन को एडिट करि परिवे ऑप्शन ए हबो राइट आंसर which is the default format for saving a word document in MS Word 2007 or above जे कोनोसी भी गोटे वर्ड डॉक्यूमेंट रो डिफरेंट इट कोन कहिछि डिफॉल्ट फॉर्मेट कहिछि तो डिफॉल्ट फॉर्मेट पई DOCX यूज करा जाय दैट इज फाइल एक्सटेंशन जाको कहै छै DOCX हेबो हेरो राइट आंसर फाइंड एंड रिप्लेस यूटिलिटी इज अवेलेबल इन फाइंड एंड रिप्लेस ता आपनकर वर्ड रे अवेलेबल रहिछि एक्सेल रे रहिछि एंड पावर पॉइंट रे रहिछि मींस ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी हेबो योर राइट आंसर मन रखंतु ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द फार्मूला फॉर एडिंग सेल A1 एंड A2 इन MS Excel आपण A1 सेल को एवं A2 सेल को कोन करिवे ऐड करिवे सिंपली देखंतु इक्वल सहित A1 plus A2 रो रेंज को नेबे इज ऐड हबो which command will you choose to convert a column of data into rows in MS Excel it means कोन से को कॉलम रो डाटा को आपण रो रे रखिया पई छै सेति पई एडिट सिबे देन पेस्ट स्पेशल देन ट्रांसपोज करेबे ट्रांसपोज करले आपनकर जहा भी कॉलम रो डाटा रो रे आसीबो to select one hyperlink after another during a slide presentation what do you press देखंतु एठी कहला हाइपरलिंक तो जानछंती कंट्रोल के हाइपरलिंक हबो बट आपण हाइपरलिंक को सिलेक्ट करूछंती वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर माने कोन हला आपनकर दुईटा स्लाइड और दुईटा टैब जहा भी किछ ओपन हबो देन आपण व्हाट डू यू प्रेस देन या पर आपण टैब की प्रेस करि परिबे ऑप्शन ए टैब हबो यार राइट आंसर यप नेक्स्ट बा which shortcut key insert a new slide in a PowerPoint very important न्यू स्लाइड माने कंट्रोल एन हबो नाही ऑप्शन बी हबो राइट आंसर न्यू स्लाइड को कंट्रोल एम जरिया रे इंसर्ट करा जाय नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रथमे कोन आसीबो प्रथमे आसीबो आपनकर किलोबाइट देन या पर मेगाबाइट देन बाइट देन बिट मींस बिट होची डाटा रो स्मॉलेस्ट यूनिट
देन यहाँ पर बाइट आसीबो देन मेगाबाइट आसीबो देन किलोबाइट ओके तो एमिति हबो आपनकर राइट आंसर क्लियर बीट किलोबाइट मेगाबाइट नो एटा भी भूल अछि आपनकर प्रथमे आसीबो कोन ऑप्शन बी आल्सो भूल अछि प्रथमे आसीबो बीट हम जानि चंदी प्रथमे बीट आसीबो देन यहाँ पर आसीबो कोन बाइट बाइट पर आसीबो आपनकर किलोबाइट यहाँ पर आसीबो आपनकर मेगाबाइट ओके एटा हबो सीक्वेंस प्रथमे मेगाबाइट बीट पर जिगाबाइट आसीबोनी फॉलोइंग करेक्ट बीट पर किलोबाइट मेगाबाइट देन बाइट एटा नन ऑफ दिस हबो राइट आंसर ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर ओके बिकॉज़ प्रथमे बीट आसीबो देन बाइट आसीबो देन किलोबाइट देन मेगाबाइट देन आपनकर जिगाबाइट देन आपनकर टेराबाइट एमिति थाए सीक्वेंस टी सो नन ऑफ दिस इज योर राइट आंसर ओके और के ऑप्शन ठीक अछि कि नाही सीक्वेंस अनुसार जदि हम देखिबा नाही so none of these is your right answer next question number 35 देखंतु the term QWERTY keyboard means the keyboard layout of dash alphabetic characters first 6 alphabetic characters found on the top row of keys displaying letters option A हबो यार right answer okay QWERTY एटा कोन कीबोर्ड रे थिबा प्रथम 6 टी लेटर अटे next which of the following can be used to animate how the presentation moves from one slide to next गोटे स्लाइड रु नेक्स्ट स्लाइड को जते बेले गोटे प्रेजेंटेशन गोटे स्लाइड मूव करूची जहा इफेक्ट आसीबो सेति पई ट्रांजिशन को यूज करे दे ट्रांजिशन से हो यार राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट what process should be used to recall a document saved previously it means कोन आपण ऑलरेडी सेव करछन सेटा ओपन करि परिबे ऑप्शन सी हमर राइट आंसर ओपन वी कैन से नेक्स्ट द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज सिस्टम यूनिट रे थिबा मेन सर्किट बोर्ड को कहा जाय मदर बोर्ड और एटा को पीसीबी मध्ये कहा जाय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मध्ये कहि परिबा नेक्स्ट ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ कोन गटे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क गटे ऑप्शन A our right answer wireless personal area network next if a new device is attached to a computer such as printer or scanner its dash must be installed before the device can be used अपन को यार ड्राइवर को इंस्टॉल करिवार अछि प्रिंटर स्कैनर रो सो दैट अपन हार्डवेयर को एक्सेस करि परिबे हार्डवेयर डिवाइस को यूज करि परिबे यू मस्ट इंस्टॉल द ड्राइवर फर्स्ट तो याथिला मॉक टेस्ट 21 आउट ऑफ 40 आपनकर स्कोर केते रहउची आपन देखि परिबे एवं आपन हेरो पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे आई होप ए क्लास टी आपन मानन पई बहुत यूजफुल रहइबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास